Okay, as already we have learned about Lord Canning, some improvement or some step what he had taken. So after that what happened? Here you can see Indian Council Act 1861. What act this is? British Parliament passed the Indian Council Act 1861 to make the educated Indians, here you can see, to make the educated Indians familiar with the administrative structure. Why they passed this act? Why? Because what happened? After Sepoy mutiny, Indians were not permitted to take part in the new administrative system. Why? The based on the Government of India Act 1858, Indian were not permitted. New administrative system. Administrative system, you know, the administer the state, country, province. So administrative system. So there was no provision for creating any kind of representative also. So here what happened? So they though Indian people not permitted, so that's why many educated Indians, they were unhappy, they had dissatisfaction. Okay, dissatisfaction for Britishers, they had dissatisfaction for Britishers. That's why Britishers want to please Indian people, that because they knows if again rebellion started, they could not control this second time. So that's why they wanted to please Indian people. So what they made, this central administration. So 1861 Act, they made central administration, some provisions and provincial administration. Central means whole country. Okay, central means whole country, and provincial means under country some state. Okay, we have how many state? We have 28 state and 9 union territories. So this is mostly what we are under central government also, and each and every state have their own government. All state, 28 state, they have own government. We have CM and we have PM. PM for country, that is central administration. Okay, PM central administration, whole country run by PM, and state administration, that is CM. Remember, that is CM, state administration. So this one, what they made, central administration some provision. So here you can see the Indian Council Act of 1861 directed the formation of legislative assembly at the center and state. Okay, so that means center, under center what comes? State. Like now also we have under center comes state, and legislative assembly, what you can see here, I have written law making body. Legislative assembly means law making body who prepare law for a country, for a state. So in a now also we have parliament for country, and then Vidhan Sabha, Vidhan Parishad for state, that is law making body. जो body law बनाता है, आइन कानून बनाता है, that is law making body. So they made this system in central administration, that time in under the Act of 1861. So they made decentralized power. Decentralized means power from one to given another, that is decentralized power, not kept under one hand. Decentralized power. So that means state also got some power to make laws for own state, and center made some laws for whole country, that is decentralization. Assembly means, legislative assembly means law making body. Next point, for the first time Indians got the place in the central legislative assembly. Yes, for the first time. Some person name you can see in your book also, read out the book also, you can see Raja Bahadur Dinkar Rao, ex-minister of Kingdom of Gwalior, Raja Bahadur Narinder Singh of Patiala. Some Rajas, actually some wealthy people or king, they got this chance. Then also whatever, though common people not got chance, but at least Indian people got first chance to make
some law to make some laws in legislative assembly. Though power were so limited for Indians, but then also means then also Indian people got चांस, जो भी हो नाम के वजह से ही एटलीस्ट इंडियन लोगों को चांस मिला असेंबली में बैठने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, 1861 एक्ट empowered the Central Legislative Council in to make suggestion and make laws on the revenue. यस, ये एक्ट ने क्या पावर दिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दिया कि रेवेन्यू में, फाइनेंस, डिफेंस, फोर्स, प्रोटेक्शन, टेरिटोरीज में क्या बना है, नेटिव ऑफ इंडियन स्टेट, और ब्रिटिश जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्टेट, उसमें क्या नेटिव स्टेट मतलब जो स्टेट अंडर राजा महाराजास के अंदर था, और कुछ स्टेट जो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था, सो सबके अंदर क्या था, सेंट्रल को पावर दिया. ओके, सेंट्रल को पावर दिया कि वो लॉ बनाए जो पूरे स्टेट फॉलो करेंगे रेवेन्यू में, फाइनेंस में, डिफेंस में. देन आवर लास्ट पॉइंट, 1861 एक्ट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल. यस, इस एक्ट ने फिर से और एक सजेस्ट किया, क्या, लॉ तो बनाने के लिए सजेस्ट किया लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉ के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया. अब लेजिस्लेटिव लॉ तो बनाना है, लॉ के साथ क्या करना है, उस लॉ को चलाना भी है, तो कौन चलाएगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सो दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल हु इम्प्लीमेंट द लॉज. These are the what systematic procedure they followed also. Actually, these are some procedure what now also we follow. Now also at present India we are following. So we have legislative assembly, like 3 organs of the government. When we say 3 organs of the government, organs of the gov, what 3 organs of the gov actually what, legislative, legislature, executive, then judiciary, these 3, LEJ. Okay, these 3. Legislative means law making body, executive means that body implement the laws, run the laws, and judiciary give justice. These are the 3 organs of the government. So these are some important points for central administration what they made under the act of 1861. So here is another important point. After central administration, provincial administration. Province means राज्य. Okay, state now we call state. So इसको बोलते हैं राज्य, और central को बोलते हैं मतलब mostly for whole country. So province means राज्य. So यहाँ पे क्या दिया है, the act of 1861 aim at making the state government powerful. Yes, यहाँ पे दिया है कि इस एक्ट के द्वारा स्टेट को भी कुछ पावर दिया था पावरफुल करने के लिए. क्या क्या दिया था कि वो भी लेजिस्लेटिव क्या करे, वो भी मतलब उनका भी पावर है कुछ लॉज बनाने के लिए. सो प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. सो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पावर. दैट मीन्स पावर ओनली सेंटर के हाथ में नहीं रहता, जैसे चाइना में ओनली पावर सेंटर के हाथ में रहता है, तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज. इंडिया में क्या है, डिसेंट्रलाइज है, स्टेट के हाथ में भी बहुत सारे पावर्स हैं. इसीलिए हमारे यहाँ पे अभी भी हमारे क्या है, इंडिया में कुछ स्टेट में विधान परिषद, विधानसभा, ये सब है जहाँ पे पावर लॉज बनते हैं फॉर देयर ओन स्टेट. एंड पार्लियामेंट तो है ही जो होल कंट्री के लिए लॉ बनाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Act of 1861 permitted the governors of Bombay, Madras to create legislative council. Yes, before it legislative council again मैं बोल रही हूँ law making body. So पहले क्या था, पहले बॉम्बे मद्रास बंगाल के अंदर था. ओके, दिस बॉम्बे मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी ऑलरेडी आई एक्सप्लेन. तो बॉम्बे एंड मद्रास बंगाल के अंदर था, बंगाल के अंदर था, तो इसलिए उनके पास खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था. तो यहाँ पे क्या क्या है, बॉम्बे और मद्रास को भी बोला है कि आप लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं जहाँ पे आप लोग लॉ मेकिंग कर सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट सी, द 1861 एक्ट प्रोवाइडेड सम लीगल पावर टू द न्यूली फॉर्म्ड प्रोविंशियल. कुछ न्यूली फॉर्म प्रोविंस भी बने थे, जैसे न्यूली फॉर्म प्रोविंस नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न फ्रंटियर, पंजाब. सो कुछ न्यूली फॉर्म प्रोविंस भी बने थे, बंगाल प्रोविंस. सो न्यूली फॉर्म कुछ राज्य बने थे, तो उस राज्य को भी बोला कि उनका भी कुछ पावर है
की लॉ बना सके, बट पावर लिमिटेड था, सब नहीं था, सब लॉ वो सब लॉ नहीं बना सकते थे, कुछ लिमिटेड पावर था, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट उन्होंने राइट दिया था. So last on we can see this 1861 Act province the Governor General of Bengal more powerful. यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, फिर से क्या बोला है, जो पावर तो दिया था लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावरफुल बना दिया, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी लॉ बना सकते थे विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल. काउंसिल मीन्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे अदर स्टेट के, उनको बिना पूछे ही मतलब गवर्नर जनरल कुछ भी कर सकते थे. सो गवर्नर जनरल ऑलरेडी ऐसे हेड, सो वो कुछ भी कर सकते थे काउंसिल को बिना पूछे. सो इसमें थोड़ा सा क्या था, प्रॉब्लम था कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दिया. सो यहाँ पे आपका यू कैन get some points also, question also may come. So write the demerits of provincial administration, so you can write these points, or if question come, write some points of provincial administration, this also points you can write. So here demerits, merits, both point you can write here, write from here. So I hope you have understood for today till here. Thank you.